Hello, namaste all. Today we are going to see Mandir. Unlike many places in India where Ravan is considered to be the evil person, this temple is dedicated to him, and he is considered locally he is considered as a scholar. And the I am at right now, it is Bishrak. It is on the name of Bishrao, who was Ravan's father, and it was from. It is as per the local tradition, which has been passed down through generations, and universally it is not accepted that Ravan was born here. However, as per local traditions, it is considered that Ravan was born here, and they worship Lord Ravan. So I am showing you the front side of the temple. Now I'll go inside the temple, show you the entire photograph of this temple, which is dedicated to dedicated to Ravan. And as we know, Ravan was a great devotee of Lord Shiva, so there is a dedicated temple for Lord Shiva over here. This is the temple of Lord Shiva, and it's considered that Ravan was born here. And the people during the Shahara, the people of this village, that is Bishrak, celebrate the Shahara. They don't burn the effigy of Lord Ravan, because they consider Ravan to be their ancestor, and they worship him, and they worship him for his devotion to Lord Shiva. So there is a Lord Shiva temple over here dedicated to Lord Shiva. There's a temple. ऐसा माना जाता है लोकल प्रथाओं में कि रावण, जैसे मैंने बताया कि विश्रव जी के पुत्र थे रावण, और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के लोग भगवान राम को नहीं मानते। भगवान राम भी उतने ही पूजनीय हैं जैसे दूसरे देवी देवता। रावण बहुत बड़े स्कॉलर थे, and when it comes to his knowledge, he was an astrologer, great astrologer. He was the greatest warrior, and he was very knowledgeable. He had the knowledge of the entire Vedas, and people respected him for that. However, his knowledge was clouded, I would say, or he got his destruction or his downfall came due to his pride and ego. And it is the common perception that not common, yeah, whenever somebody has knowledge and the entire all the virtues, he should not be proud and he should not be egoistic. That we can learn from Ravan, from Ravan's downfall. And लॉर्ड रामा, जैसे पता है भगवान राम तो बहुत पूजनीय थे, रावण भी बहुत विद्वान थे, भगवान राम भी बहुत विद्वान थे। तो भगवान राम तो वो बचपन में जहाँ पढ़ने गए उस पर एक चौपाई है रामचरितमानस में, गुरु गिरि गए पढ़न रघुराई, विद्या सब पाई। तो अल्पकाल में ही भगवान राम को, प्रभु राम को सारे विद्याओं की जानकारी हो गई थी। सो ही इज़ द क्रिएटर ऑफ all the prodigies, the entire prodigies I would say. Now when we come across one child prodigy, हम बोलते हैं कि अरे भाई ये चाइल्ड प्रोडिजी है। प्रभु राम की कृपा से तो सभी चाइल्ड प्रोडिजी, बहुत सारे प्रोडिजीज हो सकते हैं। ही हैज़ दैट मच। भगवान राम और रावण में फ़र्क यही था, दो बोथ ऑफ देम वर वॉरियर। भगवान राम वॉज compassionate, he was honest, he was always leading his life by dharma, and Ravan lived in the captivity of his personal desires. रावण जो
पर्सनल डिज़ायर के ही गुलाम बने रहें, जिससे उनका डाउनफॉल हुआ। ही नेवर लेड बाय धर्मा, ही वॉज ऑलवेज ही रावण यूज टू लिसन टू ऋषि मुनीज। भगवान राम ऋषि मुनि की बातें सुनते थे। रावण वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीबडी, ही वॉज ऑलवेज पेइंग अटेंशन टू हिज ईगो and his personal desire. That was his dedication to his personal desire was to that extent कि इन्होंने विभीषण जी की भी बात नहीं मानी और माता सीता को नहीं लौटाया, जिसके चलते युद्ध हुआ and that led to his downfall. So भगवान तो हम ऐसा जैसे कि राम और रावण की जो बात है, प्रभु राम की और रावण की जो बात है, इट इज़ इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। लाइक यदि हम लोग भगवान राम तब है कि हृदय में रमन करने वाले, प्रभु राम जो हैं हृदय में रमन करने वाले हैं। रमन्ति इति राम, ऐसा कहा जाता है, जिनसे बहुत खुशी मिलती है, जो हृदय में रमन करते हैं। तो उनको हृदय में धारण करने से हम भी कभी पर्सनल डिज़ायर्स या वी वोंट बी मेकिंग एनी मिस्टेक लाइक रावण डिड, बिकॉज रावण had the absence of that ramatva in himself, and he was always confined to his ego, personal desire. Though he had so much knowledge, he was a good astrologer also, so he was never able to foresee his downfall. That was surprising. So our dedication to Lord Rama, if we have Lord Rama inside our heart, then I think this we can also be humble, we can also lead our life by as per the instruction by Lord Rama, and the kind of humility Lord Rama had, it was really very nice. It is something to learn from him, that in spite of so much knowledge, in spite of being blessed with so many knowledge, blessed with so many power, Prabhu Ram had never got that egoistic approach towards life. He was never in the captivity of personal desire, which Ravan was residing in personal desire. So I do have respect for both of them. However, I always am also Ram Bhakt, as you can say, because I pray to Lord Hanuman, I pray to Lord Rama. तो ये सब बातें थी जो मैं कहूँगा, जितना मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ। प्रभु राम के लिए, रावण के लिए, और इतना नॉलेजेबल थे रावण की शिव तांडव स्तोत्रम, जो कि हम सुनते हैं, विच इज़ रियली एनर्जेटिक भजन, आई वुड से। व्हेन आई लिसन टू दैट शिव तांडव स्तोत्रम, इट गिव्स अस एनर्जी, एंड आई हैव सीन पीपल वर्किंग आउट इन द जिम एंड लिसनिंग टू शिव तांडव स्तोत्रम, दैट वाज क्रिएटेड बाय रावण ओनली। तो यही है घमंड, दैट ईगोइस्टिक अप्रोच। तो इस मंदिर में, ये मंदिर है बिसरख में, बिसरख पड़ता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो यहाँ आने के लिए आप गौर सिटी सेंटर मेट्रो से आ सकते हैं और वहाँ से ऑटो करके बिसरख गांव में आ सकते हैं। यहाँ ये मंदिर है भगवान भोलेनाथ की, जो कि ऐसा यहाँ के लोग, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि रावण के लिए बनाया। वहाँ एक बहुत बड़ी मूर्ति, ऐसा फ़ोटो बना हुआ है रावण